Hi everyone, my name is Twinkle and welcome back to my channel. In today's video, I'm going to share the answers of all the questions that you guys have asked on my community post. So about 2 to 3 days back, I had left a post asking you all to share whatever questions you have in your mind, and I will be covering up as many as I can, all those questions that you've left on my tab. So if you're one of them who's left a question, then this video is for you. Keep watching. If you haven't subscribed to my channel, you know the drill. Go ahead, hit the subscribe button, like this video. And if you're not following me on my Instagram, then I also leave the link in the description box and also here. Follow me and let's get started. So because I'm making the video on a phone, I have all my questions right here in front of me on my device. So I will be looking down to read the questions. So let's take the first question here. My question is by Megha Chauhan. My question is about Etihad Airways and Emirates. Do you by any chance have any idea when will they start hiring in India? So Emirates and Etihad, if I'm not wrong, both of them were hiring. Emirates is hiring from a third party, which is Frankfin, and I have a complete detailed video about it, the whole process, how you can apply online as well as by walking in to any of your nearest Frankfin centers. I will leave that detailed video here, right? And for Etihad, they were hiring last month in November also. They were hiring in Delhi, Kolkata, Mumbai. So whenever there is a vacancy, you can check on their official website and you can start applying online itself. Although I have to tell you all, there's a big disclaimer. All these airlines, specifically Middle East airline, where you are required to move places and locations, right, to operate, these airlines take comparatively very long time in their hiring process and application. So it could be as much as 5 months, 6 months, 7, 8 months to up to a year. So you have to be very patient. If anything, any airlines, most of them are not hiring now, it's because of the FIFA, right? Everybody is busy there and they will start rehiring most probably in the month of January next year, which is mid-Jan. So please utilize this time to prepare yourself, not when the vacancy comes in. So yes, both of the airlines will be hiring after obviously New Year. After the next year comes in, nothing as of now. Okay, and somebody's written, Akash Gaude has written, yes, please consider males also. It's the same answer for both. Okay, next question. Ma'am, when will Qatar Airways hire cabin crew in Mumbai? It's the same for QR also. No hiring as of now. Everything will be resumed post mid-January itself. So if you have to prepare, if you're someone who wants to fly and apply for Qatar Airways, it's the same. Do it right away. Do your preparation right now and be prepared for interviews that are coming in the next year. Okay. Mohammed Juman Ali says, hi ma'am, I'm your big fan. Thank you. My queries are Emirates and Etihad Airlines male candidates height requirements kya hai and interview process kaise hai and in which city do you live? Please reply. So पहले तो thank you very much कि आप मुझे follow कर रहे हैं. जो आपकी queries हैं height requirements को लेके मेल रिक्वायरमेंट्स, राइट, मेल कैंडिडेट की, तो दोनों की हाइट रिक्वायरमेंट्स जो हैं थोड़ी बहुत चेंज होती आ रही हैं. स्पेसिफिकली एतिहाद की कभी वो 165 थी, कभी बीच में वो 160 हो गई, तो ये थोड़ा बहुत चेंज हो रही हैं. मैं वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, आप जाओ और चेक करो. यहाँ पे भी लिखा है चेंज होती हैं, तो आप चेक करो. मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट होती है कभी कभी 160 की, और उसके साथ साथ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मिडल ईस्ट में वो है एक आर्म रीच क्राइटेरिया, कि अगर आपको एक मार्क दिया जाए तो क्या आप अपने पैरों पे खड़े होके, नॉट ऑन द टिपटोज, ठीक है, खड़े होके आप वो मार्क छू सकते हैं कंफर्टेबली. ये नहीं कि 1 या 2 लाइन छू ली, फिंगर से टच हो गया, मुश्किल से टच हुआ, ऐसा नहीं. प्रॉपर हैंड, जो कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारे साथ बायसनेस हुई है और वो मार्क ऊपर कर रहे थे, तो आपको ये समझना होगा कि आपको ये जो आर्म रीच टेस्ट कराया जा रहा है वो इसलिए नहीं कराया जा रहा कि इट्स जस्ट ए फॉर्मेलिटी. इट्स बिकॉज यू शुड बी एबल टू पुल आउट द इक्विपमेंट एंड ओपन इट एंड यूज इट ऑल्सो. तो वो एकदम मार्क पे नहीं रखा होता. समटाइम्स यू हैव टू एक्सटेंड द हैंड, इट्स केप्ट एट अ फर्दर डिस्टेंस, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सिक्योर्ड होता है, तो उसको खोलने वगैरह के लिए आपको एक अच्छी आर्म रीच की ज़रूरत है. वो पूरी नहीं हो रही है तो आप नहीं क्लियर करेंगे. तो इम्पॉर्टेंट आर्म रीच है यहाँ पे,
और एयरलाइंस लाइक एमिरेट्स एंड एतिहाद में एक मिनिमम हाइट क्राइटेरिया भी दे रखा है जो कम से कम 160 से 165 के बीच में है, जो थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो आप ज़रूर चेक करें अप्लाई करने के समय, राइट। तो ये क्राइटेरिया है। मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ, बट मैं कुछ समय पहले प्रिसाइसली 1 ईयर बैक आई शिफ्टेड टू गुड़गांव, राइट, और मैं वहीं रहती हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। मुस्तफ़ा खान ने पूछा है वाई यू लेफ्ट योर जॉब, एंड समबडी हैज़ ऑल्सो रिप्लाइड, शी हैज़ अ फुल वीडियो ऑन हर चैनल, संतोषी वर्मा, थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली मेरी एक फुल वीडियो है that I've shot specifically for this question. Initially when I started, a lot of people were interested in knowing कि मैंने अपनी job क्यों छोड़ी। तो obviously few seconds or few minutes of my input will not do justice here, तो मैं please आपसे request करूँगी कि if you want a full explanation, that video is a heart to heart video, मैं उसका link और वो यहाँ पे video छोड़ दूँगी, आप वो check कर ले यहाँ या यहाँ पे एक आई बटन होगा, उस पर click करें। Please go through that video, it has everything in detail which will definitely help you get connected somewhere. So वो आप देखें, you will get to know your answer. तो छवि चौधरी ने पूछा है about your journey. So अगर आप मेरी कैबिन क्रू जर्नी की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक इसके साथ एक TMI कुछ अलग से शेयर करना चाहती हूँ। ऑल्दो मुझे करना चाहिए या नहीं अभी करना चाहिए, आई एम नॉट टू श्योर, क्योंकि इट इज़ इन द प्रोसेस। आई थिंक मुझे वेट करना चाहिए जब तक वो चीज़ आ ना जाए, तो तब बात करेंगे। बाकी मेरी जर्नी के ऊपर मैंने 2 बहुत ही डिटेल्ड वीडियोस बना रखी है जो मैं यहाँ और यहाँ छोड़ दूँगी, आप प्लीज़ जाओ और वो देखो, क्योंकि अगेन इतने सी मिनट्स में मैं जस्टिस ही नहीं कर पाऊँगी। प्रॉपर वीडियोस हैं, आप देखें उसे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं माही सहानी का। Hello ma'am, hope you are fine. I want to ask you that do we have to be a Frankfurt student for giving interview of Emirates airline? एंड आकाश ने फिर से लिखा है नीचे आंसर फॉर मेल्स ऑल्सो। तो जी बिल्कुल, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए एक ही आंसर होने वाला है। नो, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू बी अ स्टूडेंट ऑफ फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट टू अटेम्प्ट योर इंटरव्यू या फिर एप्लीकेशन भरने के लिए फॉर एमिरेट्स एयरलाइंस। ये मैं इसलिए कह सकती हूँ बिकॉज आई नो वन ऑफ माई कलीग्स हु हैज़ गॉन अहेड एंड इंटरव्यूड, राइट। उन्होंने एप्लीकेशन भरा था ऑनलाइन फॉर एमिरेट्स, राइट, एंड देन शी वॉज कॉल्ड बाय फ्रैंकफिन. She flew to Kolkata to give her interview and she was never a student of Frankfurt. तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप जा सकते हैं, आप वॉक इन कर सकते हैं। उनका कोई प्री सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, आप अगर वो क्लियर कर ले, एक छोटा सा इंग्लिश टेस्ट, हाइट टेस्ट वगैरह, थोड़ा बहुत लुक टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट जो भी रहता है, यू हैव ऑल दीज डिटेल्स इन दैट वीडियो ऑफ माइन जो मैंने अभी प्रीवियसली डिस्कस किया है एमिरेट्स एयरलाइंस के ऊपर। वो आप देखें, उसमें आपको सब पता लगेगा। बट दैट इट इज़ नॉट, डेफिनेटली नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर यू टू बी अ स्टूडेंट ऑफ फ्रैंकफिन। यहाँ तक कि एक अलग बात यह है कि देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ फ्रैंकफिन दैट हैव नॉट बीन ऑलवेज कॉन्टैक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट इफ़ देर आर वैकेंसीज। वो उन्हें काफ़ी हद तक मेरे चैनल से पता लगता है एंड देन दे कॉल देम एंड दैट्स हाउ दे गॉट टू नो इट। सो नहीं, आंसर इज़ नो. Preeti 22 asks me that please tell me about Qatar Airways sales assistant job, the questions they will ask, thank you. So Qatar Airways के sales assistant के jobs, so आपको मैं ये बता देती हूँ कि मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं हर एक जॉब के लिए, सो वो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चंस लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, योर इंट्रोडक्शन नीड्स टू बी डन बिकॉज बाय दैट दे डिसाइड कि वो आपको इंटरव्यू करना चाहते हैं नहीं. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेल्स असिस्टेंट जॉब के लिए एक वीडियो इंटरव्यू भी रहता है. वीडियो इंटरव्यू के क्वेश्चंस यूजुअली सिचुएशनल और बिहेवियरल रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल यू डील विद स्ट्रेस, और हाउ डू यू डील विद अ रैपिड चेंज, और हाउ वुड यू डील विद अ डिफिकल्ट कस्टमर, हाउ वुड यू डील विद अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टीम मेंबर्स. तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए एंड यू हैव 2 minutes टू ऐड समथिंग. इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये स्टार टेक्निक से होते हैं. तो ये सारे ही क्वेश्चंस और इसकी एक प्रेप रहती है विद ऑल द चेकलिस्ट्स एंड कीवर्ड्स. ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी इंटरव्यू टूल किट में इंक्लूड कर रखे हैं. अगर आपको लगता है दैट आपके पास प्रेपरेशन का समय नहीं है और आपको एक कोई कस्टमर सर्विस के हिसाब से, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे आंसर्स अवेलेबल हैं बट वो स्ट्रीमलाइन नहीं है आपके रोल के हिसाब से. सो अगर आपको लगता है कि कोई और
आपकी तैयारी करें, तो मैंने अपनी 14 ईयर्स की एक्सपर्टीज़ यूज़ करके एक इंटरव्यू टूल किट तैयार की है, जिसमें सारे ही क्वेश्चंस एंड आंसर्स जितने भी रिसोर्सेज हैं सब कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हैं। आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। लास्ट मिनट प्रेपरेशन के लिए मैं लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप वहाँ से उसे परचेज़ कर सकते हैं अगर आपको लगे वो हेल्पफुल है। अदरवाइज़ आप मेरा कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं। माई नेक्स्ट कोर्स इंटरव्यू कोचिंग प्रोग्राम दैट इज स्टार्टिंग ऑन द 19th of December, जस्ट इन अ वीक, उसमें एनरोल कर सकते हैं। आई विल बी डूइंग एंड टेकिंग द कोर्स लाइव। सारे ही मॉड्यूल्स और टॉपिक्स वट एवर दैट इज कवर्ड विल बी ऑन माई वेबसाइट www.twinkleanand.com, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। डायरेक्ट लिंक, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दैट, या तो यहाँ कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। आई माई सेल्फ पर्सनली विल गेट बैक टू यू। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जिसके लिए आपको प्रिपेयर करना होता है, so that you are able to cover up all the questions. Some basic questions are there, 20 से 25, जिसके लिए जब आप प्रिपेयर करें तो उसके बाद आपको बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए भी एक आइडिया हो जाता है। वो क्वेश्चंस भी मेरी इंटरव्यू टूल किट में प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर जरूर करना चाहिए। व्हाई डू यू वांट टू बिकम अ सेल्स असिस्टेंट, व्हाई कतार एयरवेज, व्हाई दिस जॉब रोल, व्हाई डू यू थिंक, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कस्टमर सर्विस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कस्टमर सर्विस, और सेल्स एक्सपीरियंस, योर पास्ट एक्सपीरियंस। Whenever the interview is one-on-one, it's mostly based on your personal profile. And when the interview is video interview, specifically in these cases, you have to be prepared with behavioral and situational based questions, जो मैंने already include किए हैं। Next question है from Chaunga HD. I'm sorry if I'm pronouncing the name wrong. Please forgive me for that. Do you think what is important to learn English fluently in order to work in Qatar? How will I practice? Absolutely. First of all, English में fluent होना इसलिए ज़्यादा important है because you are trying to join an airline that is having employees from over 126 nationalities. ये एक international airline है. Not just the customers but also your team members, your trainers, your training, every single thing will be in English. You need to understand it's not just the service but your daily life understanding, you giving them solutions, understanding problems, service, every single thing will be in English. So if you're not fluent in English, you practically cannot survive there. I'm not saying you have to be very well versed or be someone who has very advanced English, but basic English so that you can explain yourself well and you can also understand the other person well. ये होना ज़रूरी है। Fluency we mean that your syntax skills, यानी एक सेंटेंस को फॉर्म करना वो भी सही तरीके से, इस तरह से कि सामने वाला आपकी बात समझ पाए अच्छे से, irrespective कि वो आपकी नेशनैलिटी का है या नहीं, और आप भी वो भी आपको बताएं कुछ तो आप समझ पाओ उनकी बात। दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए। फ्लुएंसी को आप एडवांस्ड इंग्लिश या किसी को देख के जिससे आप बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं उसे कॉपी करने की कोशिश, ऐसा सब की कोई ज़रूरत नहीं है। बट येस, फ्लुएंसी से इतना मतलब है कि आप फॉर्म करने चाहिए सेंटेंस और आपको बहुत ज़्यादा पॉजेज नहीं लेने पड़े, बहुत ज़्यादा सोच में नहीं पड़ जाए जब भी आपको कोई अपनी बात कहनी है और आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े हर बार। तो इतना आपको फ्लुएंट होना चाहिए। प्रैक्टिस की बात आए तो प्रैक्टिस ये कि प्रैक्टिस पूछने की बजाय प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे एफर्ट बहुत ज़्यादा लैक करता है। मैंने ये देखा है कि इंग्लिश जो सीखना है वो एक तो लोग हेजिटेशन से नहीं सीख पाते हैं, दूसरा लोग लोगों से पूछते रहते हैं टिप्स के बारे में। सो दोनों ही चीज़ें आपका टाइम वेस्ट कर रही हैं। मैं दोनों ही केसेस में ये कहूँगी कि यू हैव टू स्टार्ट। आप सिर्फ स्टार्ट करें, हेजिटेट मत करें कि कोई आप पे हंसेगा, कोई आप पे कमेंट करेगा। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि लोग आपके लिए क्या रिएक्ट करेंगे, बिकॉज इफ़ दे आर वरीड, देयर आर पीपल हु आर डूइंग देयर जॉब्स 100% वेरी वेल, क्योंकि वो एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे लगता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ और मेरी वीडियो अच्छी नहीं बनेगी, मैं तो अभी रेडी नहीं हूँ, मैं तो प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, आई एम नॉट लुकिंग अ सर्टन वे, मेरी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, सो इन दैट केस मैं वो तब तक नहीं कर पाऊंगी जब तक मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर रही परफेक्शन से कि ये मेरा परफेक्ट का आइडिया ये है और मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हूँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यूजुअली, हम एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आप से बहुत जल्दी सेटिस्फाई नहीं होते अपनी परफॉर्मेंस से। तो जब तक हम सेटिस्फाई नहीं होते हम स्टार्ट नहीं करना चाहते और वहीं हम गलती करते हैं। सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू हियर इज़ कि आप स्टार्ट करें लोगों से बात करना। आपकी सराउंडिंग्स और आपके जो लोग हैं आपके आसपास वो बहुत मैटर करते हैं। चाहे तो आप सुने, आप पढ़ें या आप लिखें, कुछ भी करेंगे तो आपको अगर बोलना है, इंग्लिश फ्लुएंट होना है, तो वो आप सिर्फ बोल के ही सीख सकते हैं, सुन के या पढ़ के नहीं। वो आप नए नए वर्ड सीख सकते हैं बट दैट इज़ अ लेटर पार्ट। अगर आप बोलने की बात करें तो यू हैव टू स्पीक, चाहे वो कैसा भी हो। तो आई विल जस्ट से
इट्स सिंपल, स्टार्ट टॉकिंग. अगर आप मेरी भी कुछ टाइम पहले की वीडियोस जाके देखेंगे, इफ यू वॉच देम, गो बैक इन टाइम, यू विल सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, कमेंडेबल डिफरेंस. मैंने खुद भी देखा है इन द वेज आई टॉक. और पहले जब मैं बात करती थी बहुत फिलर्स होते थे, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई नाउ फाइंड कि अरे ये तो करना नहीं चाहिए था. बट हैड आई नॉट स्टार्टेड देन, आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू रीच हियर नाउ. जबकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है. तो मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ दैट जस्ट स्टार्ट, जस्ट डू इट. जे रुद्रेश ने लिखा है, नो क्वेश्चन एज सच, जस्ट अ स्मॉल रिक्वेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ डियर ट्विंकल, ईट वेल, स्लीप वेल, गेट बैक टू योर ग्रूव सून एंड जस्ट डू वॉट यू डू because you're awesome. Thank you very much, Rudresh, and to everyone, not just these comments and questions. There are so many people on my Instagram. अगर आप follow नहीं कर रहे हैं तो करें, आपको थोड़ा बहुत update रहेगा कि मेरी life में क्या चल रहा है. And those who all don't know, बहुत सारे questions मुझे आए हैं, comments आए हैं जहाँ पे लोगों ने पूछा है, I hope you're doing well. They are very happy to see me get back and feeling a little normal. They are happy. There are names. I want to actually read out their comments जहाँ पे लोगों ने अपना concern दिखाया है. And जिनको नहीं पता है, let me share with you all that my father passed away 2 weeks back. He was fighting in ICU from the past 24 days. He was admitted in a hospital. He was in ICU. He was a very critical patient. And हमने ऑब्वियसली नहीं सोचा था जो हुआ. सो देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज करंटली डूइंग एवरीथिंग. आई वॉज इन फुल वर्क जोन एंड कंटिन्यू रखना पड़ा. वहाँ से मैंने कुछ छोड़ा भी, बहुत सारी चीज़ें हुई. सो आई रिसेंटली व्हेन आई लॉस्ट माई फादर, यू ऑल हैव बीन सच अ ग्रेट सपोर्ट. बिना कहे, देयर वर सो मेनी विशेस, यू वर ऑल देयर इन दैट टाइम फ्रॉम day 1 to day 24 when this unfortunate event happened. तो उसके साथ साथ जो भी हुआ है, मेरी फैमिली, मेरे इंस्टा फैमिली, आप सबको ये चीज़ मालूम है. और इतना ज़्यादा लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, सपोर्ट किया है और आज भी करते आ रहे हैं. तो इन क्वेश्चंस में भी कहीं ना कहीं पीपल हैव बीन सो कंसिडरेट while asking this. And people are asking, I hope you are fine now. फाइन तो मैं नहीं कहूँगी, not 100% fine, but this is something that I love doing. This is what my father always wanted me to do. He has been proud of the way I am. And जो भी मैं करूँ, मतलब he always wanted me to be independent, to work, to be the best in everything. And उनको खुश करने का ये सबसे अच्छा तरीका होगा. So I want to get back, not just because कि ये सिर्फ उनकी इच्छा है, बट ये मुझे भी हेल्प कर रहा है. दिस इज़ वॉट आई लव डूइंग, दिस इज़ वॉट आई एम पैशनेट अबाउट. एंड वॉट बेटर वे टू गेट बैक, नॉट टू नॉर्मल, बट एटलीस्ट कोप अप विद दिस टाइम एंड बी सेन. तो उसके लिए आई एम बैक वर्किंग हियर एंड आई विल कंटिन्यू डूइंग इट, क्योंकि मुझे इससे थोड़ा अच्छा लगता है. मैंने बहुत, आई वॉज इन 2 minds अबाउट मेकिंग अ वीडियो. मैंने बहुत ज़्यादा सोचा था कि आई विल मेक अ वीडियो अबाउट माई फादर एंड वॉट हैपेंड विद अस, बिकॉज इट वॉज अ स्ट्रगल, नॉट बिकॉज अ लॉस ऑफ लाइफ ऑफ अ डियर वन और अ लव्ड वन, बट जो भी हमने उन 24 डेज़ में देखा और क्या हुआ, उसकी एक अलग वीडियो होनी चाहिए. मैं 2 minds में हूँ, बिकॉज आई डोंट नो यू वुड बी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट और नॉट. कुछ लोगों को लगेगा, नहीं लगेगा. सो अगर आपको लगता है मुझे शेयर करना चाहिए ये वीडियो, काफ़ी अलग रहेगी वो वीडियो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और ताकि मैं अपना ट्रू सेल्फ आपके साथ शेयर कर सकूं. अगर मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी. ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू नॉर्मल. फ़कीउल, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, अपॉलॉजीज़ अगर मैं नाम अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ. Make a video on how to answer behavioral and situation based questions and what is the reason behind the questions to be asked. Thanks in advance. So बिहेवियरल और सिचुएशन क्वेश्चंस के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. इसकी एक टेक्निक होती है दैट आई कवर माई पेड प्रोग्राम्स ऑल्सो, मैं उसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी. द रीजन वाई दे आस्क दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रोफाइल, द काइंड ऑफ रोल दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, विच इज कैबिन क्रू, जहाँ पे हार्ड स्किल्स से ज़्यादा soft skills are involved. It's based on your behavior. How will you perform in a particular situation? So when they ask you a behavioral question, for example, how do you deal with stress? So if you're someone who knows what is stress, how do you deal with stress in your daily life,
you are more likely to perform better in future also. So what they use is they use their your past behavior, your examples, how you performed in that situation before, as a predictor of your future actions or future behavior. And that is exactly why they ask you all these questions. People who have examples in their life from their paid experiences or unpaid experiences, both, they are able to recognize a situation and a skill, and they're also able to tell them that how have they utilized this skill in resolving a particular problem, and which gives them a fair idea to basically hire someone who they think can be molded and has the perfect skills to sustain in a role like cabin crew. Hence, they ask you all these questions. Next question लेते हैं. What is the vision requirement? नेहा डोगरे ने पूछा है. What is the vision requirement for airlines with or without glasses? So, with or without glasses, it really depends on the airline. Usually, domestic में +4 का requirement है. बहुत ज़्यादा एयरलाइंस में इंडिया में आई हैवंट सीन जो ग्लासेस यूज़ करना वाइल फ्लाइंग अलाउ करते हैं, बट इंटरनेशनल मिडल ईस्ट में एटलीस्ट दे अलाउ यू, इंटरनेशनली दे अलाउ यू. एंड हर एयरलाइन का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है रिक्वायरमेंट, सो दैट यू हैव टू रियली चेक, गेट a hang of while your selection is going on. जब आपको मेडिकल रिक्वायरमेंट्स पता लगती हैं, मैंने काफ़ी एयरलाइंस के मेडिकल रिक्वायरमेंट्स कवर किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, सो यू मस्ट चेक देम आउट. बट यूजुअली +-4 होती है, कहीं ना कहीं +-6 भी रहती है. सो आप लेंसेज ज़रूर पहन सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज ज़रूर पहन सकते हैं, पर ग्लासेस बहुत इंडिया में मैंने कहीं नहीं देखा यूज़ करते हुए, रिक्वायरमेंट नहीं है और इंटरनेशनली अलाउड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन अहमद ने पूछा है. हेलो मैम, आई एम अ फ्रेश ग्रेजुएट एंड आई डोंट हैव अ जॉब बट आई एम स्टिल सर्चिंग. I was trying to be a cabin crew but I didn't receive any email from company, so I'm watching videos. So can you tell me any tips that will help me to join a cabin crew as a man, and do have to follow any skin care? So tips तो बहुत सारी हैं जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी हैं. कैबिन क्रू के लिए टिप्स से ज़्यादा एक पर्सनालिटी का डेवलप होना बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ समथिंग दैट आई विल हैव टू टेल यू. आप चैनल्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, आप कोर्सेज अटेंड करते हैं, बेसिकली आपको टाइम चाहिए. आपकी एक पर्सनैलिटी है, यू हैव सम हैबिट्स, यू हैव सम थिंग्स दैट यू नीड टू चेंज एज अ पर्सन, दैट नीड्स टाइम. Personality, your approach towards something needs to change, right? You have to be someone who's friendly, genuine. But ये सारी बातें सुनने और इंटरनेट पे भी हर जगह है, but how do you inculcate them in your daily life, your reactions, your behavior? फॉर दिस यू नीड सम टाइम. तो अगर टिप्स की बात करें कैबिन क्रू बनने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए मैं कहूँगी कि आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करें. उस पर एक नहीं बहुत सारे टिप्स हैं, और ऑल्सो मेरी वीडियोज़ जिस पे लास्ट मिनट टिप्स ज़रूर लिखी हुई हैं. सो इफ़ दैट हेल्प्स यू, प्लीज़ गो हैड एंड चेक दैट. स्किन केयर की बात करें, सो बीट एनी जेंडर इन दिस डे एंड एज, इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल. एवरीबडी हैज़ टू फॉलो अ बेसिक स्किन केयर. सो अगर आप एक बिगिनर हैं, इफ़ यू आर इन योर अर्ली 20s, सो आप एक बेसिक CTM ज़रूर फॉलो करें. इनफैक्ट क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग और सनस्क्रीन ज़रूर ऐड करें, बिकॉज दिस इज़ हाउ इट विल हेल्प योर स्किन टू लास्ट एंड बी बेटर इन द लॉन्गर रन. ये होना ज़रूरी है. बाद में हम प्रॉब्लम्स के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल किसी को पिगमेंटेशन है तो वो उसी हिसाब से कोई एक्टिव्स ऐड कर सकते हैं. बट फॉर नाउ आई विल से एक अच्छी CTM होना बहुत ज़रूरी है. इनफैक्ट अगर टी भी यूज़ नहीं करना, टोनर भी स्किप करना है, तो आप अपना फेस एटलीस्ट ट्वाइस, मॉर्निंग एंड इवनिंग या नाइट में सोने से पहले एटलीस्ट CTM ज़रूर करें. क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग ज़रूर करें. नॉट बिकॉज ये एक डेली लाइफ में ज़रूरी है, बट यू हैव चोजन, यू आर choosing a career in aviation जहाँ पे presentation and grooming is extremely important. उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर CTM करना और स्किन केयर करना लॉन्ग रन में भी लाइफ लॉन्ग बहुत ज़रूरी है. अरुण झाकर ने क्वेश्चन पूछा है, मैम कैन आई बिकम अ कैबिन क्रू? आई हैव ज़ीरो एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, ऑल्दो आई हैव स्टडीड अ लॉट अबाउट कतार एयरवेज एंड प्रिपेयर्ड मेनी क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू. अरुण, डेफिनेटली आप कैबिन क्रू बन सकते हैं बिना एक्सपीरियंस के भी. वो डिपेंड करता है आप कौन सी एयरलाइन चूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर एक रिक्वायरमेंट है प्रीवियस एक्सपीरियंस की, या फिर नहीं. अगर नहीं है तो डेफिनेटली आप अपने आप को प्रिपेयर करें. और आप कह ही रहे हैं यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. एक छोटी सी टिप, ज़्यादा स्ट्रेस आप अपने क्वेश्चंस को मगअप करने में, क्वेश्चंस के आंसर्स ना यूटिलाइज करके, टू बी एबल टू थिंक अबाउट अ सिचुएशन एंड आंसरिंग देम इज़ वॉट आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू डू. फोकस ऑन, आप समझने पे, समझ के क्वेश्चन को आंसर करने में ज़्यादा फोकस करें रादर देन मगिंग अप. बिकॉज वॉट हैपन्स इन दिस डे एंड एज, recruiters and interviewers mold the question, twist the question a little bit. आ जाके questions
सेम ही होते हैं, बट व्हाट दे डू इज दे ट्विस्ट द क्वेश्चन. सो इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ और आपने यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन, यू नो द आंसर, यू विल बी एबल टू आंसर इट इन योर नॉर्मल बेसिक इंग्लिश प्रॉपरली विदाउट हेजिटेशन. हाउएवर ऑन द अदर हैंड अगर नहीं है, सिर्फ आपने मगअप किया है, तो आप वहाँ पे फंबल करेंगे एंड दैट्स वेयर यू लूज कॉन्फिडेंस and also the confidence of the recruiters in you. Sankar Thapa Magar ने लिखा है, hope you're fine in normal condition, and my question is, what is your favorite airlines of the world? From Kathmandu, Nepal. Thank you for asking about me and my condition. I'm doing a little better now. My favorite airlines has to be an airline that I've worked for. मैं biased रहूँगी because that is the airline I find has given me so much exposure, so much experience, and has a big hand in the kind of person I am today, in my personality, the change, every single thing has been given by Qatar Airways. So I have proper inclination towards Qatar Airways. Apart from that, that is the #1 airline in the world. So वो मेरे लिए भी है, because not just because they have given me so much, but actually it has been rated 7th time in a row as the #1 airline in the world by Skytrax. So definitely that. और बहुत बार मुझे questions आते हैं, Emirates अच्छा है, Etihad अच्छा है. So I'll tell you something, there are a lot of priorities और हर किसी की अपनी preference होती है. If you have a choice, definitely you can make your choice depending upon आपको क्या क्या priorities है, preferences है. कोई rules को पसंद करता है, कोई जगह को पसंद करता है, कोई uniform की वजह से choose करता है. But अगर choice नहीं है तो जो मिले वो ले लेना चाहिए. So for me it has to be Qatar Airways, hands down. Talha Mehjabeen. Hello ma'am, hope you're fine. My question is that in Qatar Airways, what is the salary and other offers like accommodation allowance etc. of a customer service agent? Talha, मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है. I have a very good video on detailed again on Qatar Airways customer service agent, sales agent. So the salaries of all these customer service roles are quite relevant and similar, and it's according to their grade 2, 3, 4, 5. According to that, their salaries differ. So I have covered that aspect also in that video. I'll leave this video link here. Just click on this video and watch this video. Accommodations usually are shared. Allowances, there is a housing and transport allowance that is given, but it depends. There are a few factors. All of that has been covered in that video, including the salary, right, which obviously you should watch that video. It is between 2800 to 3600 as a starter, right, but you must watch that video. Khushi Das ने पूछा है, after joining the job, if anyone gains 2 or 3 kgs weight or lose some weight, what will happen? So again, it is quite airline specific. In airlines in India, if you gain 2 to 3 kgs, basically if you're not in your category of weight as per your height etc. and your age, then you are also grounded. You are barred from flying and you have to wait and reduce. You have to wait and reduce your weight. ठीक है? Till the time you fall in your weight range and get back. So most of the times you're grounded, sometimes you're on hold, you're on review, and your productivity bonus or grooming allowance gets deducted. ऐसा सब होता है. Till the time 2-3 kg से ज़्यादा हो जाए तो वो आपको ground कर देते हैं. They don't let you fly and you have your meetings etc. So yes, I feel that yes, India needs to really work on this by 2 to 3 kgs, which is an everyday case. इतना ज़्यादा they should not create a hue and cry about this. However, every airline have their own standards. So yes, this is what will happen. Again, same with losing weight case. Also, if you're underweight, also the same rules and regulations apply to them after you start flying. उनका एक और question भी है, respected ma'am, I want to know if I join Vistara or any other airline and quit after 1 year, will they give me experience letter? So if you are under a contract and if you fulfill all their relieving formalities like serving the notice period, giving them an amount of money that you are supposed to pay them, if all of those things are done properly as per procedure, you will get your experience letter, relieving letter, all of that. However, if you don't fulfill it, they will not give you your experience or relieving letter, or they will ask you to pay money and so on and so forth. बहुत सारी चीज़ें होंगी because they will put it as absconded या terminated. So you need to really speak with them about your problem. मैं ये recommend करूँगी that you go ahead and properly serve the period. If you cannot by any means serve the period, and if you are also not able to pay them upfront, then just don't expect. Just write them your resignation through an email and take a copy of that and a printout of that, and have a printed copy of acceptance of your resignation letter that the company will send you via an email, right? Have that, and have all your salary slips
with you, especially for the last 6 months, in case you're joining another airline, to show them that you have to go through, like you were flying in some way, you had to resign. You'll have all those things mentioned, and that shouldn't create a problem now when you've already done it. Prish Yab. Hello, any update for male candidates who gave their interview from July till October? No one has heard from them. Are we going to be selected, or we all will be rejected? So Prish, if you are someone who is on hold after your blue background photos have been done and you've cleared your medicals, you're only waiting for your date of joining, in that case, yes, you will hear from them. However, if you have not reached any final interview stage and you have no clue, then I'm not too sure about anything. If you're saying, I will assume that you're talking about you've been selected after blue background photos and you're on hold. You're on hold because there have been people who've been called in November also, and I'm talking about males. Okay, next is by Radhika Saini. First of all, I'll wish you a happy, peaceful life ahead, and we all know you are a great fighter. Thank you very much, and time is a great healer. God bless you and your family, ma'am. My question is that I had given several interviews with Indigo Airlines, but as always got rejected from last round. People are saying there's reference going on, something like that. Is it true, or they're talking their standards are high for girls to be selected there? Hi Radhika, thank you so much first of all for all your kind words. I really appreciate them. So about being rejected from the final round, there has to be something prominent, and obviously I need to have a word with you, or I need to speak to you, observe you to know what is the problem. Like I need to have a deep conversation about it. There is nothing like reference etc that they will only hire people with reference. Aisa kuch nahi hai. When you fill their form, there is a section called if you know someone from the airline and they need you to mention their employee IDs, but that never lets them only choose those people on the basis of the reference. If you're good enough, you will be selected. It's not that you're not good enough or you're not a fit for this role, then you will still be selected. No, nothing like that works, because if that was true, families of all the employees of Indigo would be flying, like all their siblings and cousins etc would be in airline industry. So no, that doesn't work. It's not like that. Standards are high, so let me tell you something very brutally, honestly. Indigo does pay a lot of attention to the way you look and how you groom yourself, and not to the service aspect, because yes, this is a low-cost airline, and there is a difference when people are recruiting in airlines when they are full service or low cost, right? So that difference is going to be there. No offense to anyone, any airline, all of them are from the similar industry, and I have all my heart and everything for everyone who's in the aviation industry. But yes, I have also myself currently noticed that they believe in hiring people who look a certain way, or who present themselves in a different way, certain manner, which is extremely fine, which is okay, because this is the kind of industry that you are aiming at. So yes, looks are extremely important, presentation is extremely important, grooming is extremely important, and you have to also be fluent and all of that. However, they feel if you clear the first type of criteria, which is the looks and presentation and grooming, they will still be able to train you in the communication, fluency, etc. if they think you're someone who can be trained. That's why they have this PhD training, right? So why are you being rejected? That can be because of a lot of reasons. Standards high or low hai, we are no one to comment, because everybody has a different criteria. But yes, references etc going on, or backdoor entries, that's completely a lie. That's not true. In fact, I would want to wish you all the best and just concentrate on improving yourself. Okay, Lee Ji Huan has written, hope you're fine now. My dad also passed away too. Be strong, it will be fine. My question is, how cabin crew handles period pain suddenly during on board? Okay, period pains, this is very common, natural, and something which is going to happen every single month. Now it is really subjective. It depends on people. Some people like me, definitely they would not even get to know about their periods. It's very smooth and it is absolutely normal. For some people, it's the pain is on its peak when it's on the first day, or second day, and it really depends on people. However, there are people who for them it gets really worse. They are vomiting, they have crampy periods, and it's really the worst time of the month for them. So it depends if you can handle it by taking medicines that can help you with your vomiting or pain or cramps, or you would
be okay using those heating pads. Nowadays in the markets you have those patches that you can actually apply and stick it on your stomach, and that will help you with the heat. There are different things. You can have some break and put some hot water. But to be very honest, in a full service airline like QR, like Qatar Airways, where it was very hectic, we've had those days and we had people and females specifically struggling even during their period pains. The adrenaline rush when there is so much to do and you have a lot of people, you have time constraints and a lot of pressure, sometimes people even forget. But that's going to be a part of your life and you have to handle it yourself. In fact, recruiters or interviewers might ask you how would you handle it, and you should be able to answer that question for yourself. If you go with that kind of a problem in front of the recruiters, telling them that this is a problem with you, why do you think they will recruit you? You have to be able to answer and handle your problems yourself. आपको अपनी problems खुद से handle करनी है, आपको उन्हें convince करना है that it is something that is normal and you would not have to take leaves or specific time or allowances for this thing that is going to happen every single month. I know being a woman, things could be different, situations could be different, and symptoms could be different. But this is what it is and this is how it is. Unfortunately or fortunately, in this industry, you will have to operate and you will not be able to take leaves every single month for this specific reasons. So you'll either have to learn how to regulate it, and these are a few options that you can use to regulate them. Second question that you've asked is, when you're ready to go to work, suddenly you can't make it because of any health issues or something, then what do you do? So basically there is a time period like 3 hours or 4 hours before the flight, which is given to you that you can report sick. That is called last minute sickness. 3 hours before the pickup time or 2 hours before the pickup time, you can't report sick. So 2 to 3 hours, that's a deadline. That's a mark that after this you can't report sick. If you do by any reasons, then you will have to, that there will be a strict action taken against you. Obviously, if you fainted, you're vomiting, etc., you're just in no condition to operate, you can report sick last minute, but that's going to call for letters, that's going to call for meetings, that's going to be calling for a disciplinary action against you. So there are reasons, but if you're someone who's genuinely sick, you will never think of all these things. And something that has happened genuinely, if you're sick, you're sick. No questions asked. However, don't make it a habit and you think that you're not in a mood or you're just having a little cold or cough or fever, then you're waiting for the last minute. Don't do that. You have a quota to report sick every single day, but that has to be done at least 2 to 3 hours prior, not later than that. That you have to take care, because then there's a lot of operational disruption that happens, which needs to be avoided. Third question that you've asked is, are cabin crew allowed to go anywhere they want during their layovers? Yes, they can go anywhere they want and they can wear anything they want to in their layovers. But in some airlines like Middle East, you have to follow minimum rest and you have to follow that you cannot leave the country, you cannot leave the city, you cannot leave the location because of operational requirements. Sometimes we have to operate early and the rest periods might change and they might need a crew or so. So there could be changes because you cannot forget you're still on duty. So when you're outside the country or outside that particular boundary, we might have some sort of operational disruption. So considering that, there are a few rules that are written, in the manual that are just there to safeguard the company themselves, right? And also to tell you that, see, this is there in the book. But usually, mostly 98% of the time, you can go anywhere and you can wear whatever you want, but not forgetting that you're still on duty. The next question is by Preeti Khatri. Similar question hai, ma'am, I want to know the exact BMI range of international airlines and are they strict about the weight or not? Please help me. Please tell me, it will really help me. So Preeti, BMI जो होता है usually 18 to 22 रहता है, कहीं एयरलाइंस में 18 to 24 भी रहता है और कहीं एयरलाइंस में मोस्टली मिडल ईस्ट में डिफाइंड भी नहीं होता है while they are hiring. All they want you is to look proportionate. ऐसा नहीं लगना चाहिए that your body type is not proportionate, right? Sometimes you have protruding bellies or so, which might not look very pleasant, right? So there are standards, but usually मैंने problem नहीं देखा. In fact, I would say that Middle East Airlines are one of the most relaxed airlines in terms of weight and your proportion even after you start flying. Like once you start flying, while recruiting also, my personal experience, if you are 2 to 3 kgs overweight, but you look proportionate, you are in your range, like you look fit, and sometimes, you know, the bones are heavy and all of that, you are 2 or 3 kgs overweight, they still hire you. So hiring as well as flying, so there is just no problem at all.
All you need to make sure is you are fitting in your uniform properly as per the standards, and then you'll have to get your clothes and your uniform tailored, alter properly, whatever the shape of the uniform and how you look in the uniform should be in a particular way as per standards, and that is what matters. The reason being, there are so many nationalities who do not have a similar body type. Some of them are huge, some of them are wide, some of them are very petite as per again their nationalities. So they can't have one standard way on how you should look, right? You can't have one standard way of how you should look or how much you should weigh or whatever. So to maintain diversity, these things are quite relaxed. Next question by Muhammad Shahbaz Ansari is, hi ma'am, hope you're fine. My questions are, I'm good in English and in communication skill too, but I want to know how much fluency they want and what kind of English. It is simple. Is it simple English which they want or advanced level of English? I think मैंने ये question already cover किया है in my part 1. The English that they want is not advanced level, it's basic level English. But whenever you have to answer a form, please select the maximum. If it's written basic, intermediate or advanced, please select at least intermediate to advanced. Fluency level, yes, you have to select fluent, advanced. That's what you write in your application letters, because if you're someone who is underconfident on their skill, don't expect them to also show confidence in you. Simple, right? So yes, English and communication skills are very different. Communication skills should be advanced level, right? How you convey the message, that should be advanced level, but the level of English language can be basic. Basically, you should be able to form sentences properly, easily, and you should be able to understand the other person as well as the person should be able to understand you very well, right? Without having a lot of pauses, because if I do a lot of uhs and ums and a lot of pauses and I can't form a sentence, it's irritating for the other person, and that's a bigger hindrance in customer service. Second question is, I've completed my 12th 5 years ago and I have about 4 years of experience in teaching English, science and maths. My age is going to be 26 in 2023. May I mention my experience for crew? It's relevant to the job specifications. What are the difficulties that I may face? So yes, all your experiences are quite relevant, because here it's not about teaching experience, it's about interacting with students, understanding the difficulties and resolving their difficulties, helping them cope up with their problems. Personality development, you're preparing lectures for them, you're talking to their parents. So there are a lot of skills you are developing in any kind of experience. It's just how do you showcase that in your resume? How will you showcase and utilize that experience while you're speaking to the interviewer and talking about the skills that you've acquired through these 4 years of experience? It's all about that. So for me, none of your experience is irrelevant. All your experiences are quite relevant. Next question that I will take is by Sarita Dhanuk. Well, no question ma'am, just wanted to know you're fine. I know you're trying to come in normal track again, but I also know it's hard time for you and your family. I hope your family members are good. Sabse pehle Sarita, thank you so much for being so kind and asking me. Yes, it is very difficult, to be honest, and nothing can replace the loss. ये बात ज़रूर है, but having said that, I am just doing what I like doing so that it can also help me stay calm, be normal, cope up and just get back to I'm just trying to do those things, because I am someone who's a true believer in doing things. I am only doing things, I'm just taking a step forward. I am doing the tasks that I should do. I am working towards getting back to my routine, and I have full belief in me that I will be able to get back to track. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि I will be able to forget things, वो कभी नहीं होगा. I will never be able to be the same. But having said that, I'm trying to do the best for my family and my family members, because I know they're looking up to me, and if I be happy and I try to normalize, they will look up to me and they will also normalize and get back to normal. So yes, thank you again for asking. लास्ट क्वेश्चन जो मैं इस वीडियो के लिए लूँगी वो है, टेल मी, विक्रम सिंह राज पुरोहित ने मुझसे पूछा है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ व्हाट शुड बी मेंशन्ड इन दिस क्वेश्चन. This is the most important question, and it can actually be broken down into a lot of other questions like
can you introduce yourself, or can you walk me through your resume, or tell me something about yourself. This is usually the first question in an interview, and mostly after this question people will be able to decide whether they want to go ahead with you, they want to extend the interview and they are really interested in you or not. Some things that I want to highlight here is, first of all, please do not include things from your family, like family information or anything which is unnecessary. Get straight to the point. They do not have time. Try to include everything that is going to help you get the job. For example, professional things. If you're working currently, then you tell them about where you're currently working, right? What is your experience? If you're a customer service executive, if you are a volunteer at a charity institution, if in an NGO you're working, then tell them about that. Where is that located? What is your educational background? Talk about any courses, any hobbies, any extra work that you do apart from your work, but that is relevant to your job role. Include that. And then talk about 2 to 3 skills that you have acquired from that job role. Talk about your strengths that are relevant to the job role, and that will be helpful when and if and when they hire you. Tell them that your values, tell them about your passion to be a part of aviation or customer service, and then try to make an answer all in all together to answer this question. Also, to help you, I have covered this question in one of my videos, which is answering the most common questions, 10 most common questions in an interview. I will also leave that video here. You can go ahead and get all the guidelines and a cheat sheet on how you can answer this question properly. That is all for this video. This video has gotten a little bit longer, but I've tried my best to cover up everything as much as I can. Let me know in the comments section what other videos and topics would you like me to cover in my upcoming videos. Thank you so much for watching. I will see you in my next video. Till then, take care and bye bye.